lovely children, welcome back to your maths class. Let us start today's video. Class 3, subject mathematics, chapter 4, data handling, and this is the lecture number 2. One lecture we have done. In that we did pictograph. Today we are going to do lecture number 2. In this video, our subtopics are as follows. Number 1, telegraph. Number 2, exercise 4b. So children, initially we will do telegraph and later on I will explain exercise 4b. So let us start with telegraph first. As you all know that pictograph is the pictorial representation of data. Similarly, telegraph is representing of data with the use of tally marks. Suppose example number 1. One class of 33 students voted for their favorite colors. Represent the below information using tally marks. Okay, so children, let me explain you. Tally marks जैसे हम अपने पिक्टोरियल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली हम टैली मार्क्स उनके लिए ड्रॉ करते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 देन 5 के लिए 1 slant 1. Okay, so this kind of representing data is known as tally marks. 1 tally mark stand for 1 vote, means ये एक के लिए स्टैंड करता है, ये 2 2 के लिए, 3 3 के लिए, 4 4 के लिए और देन स्लांट 5th के लिए. This is the data which you have to represent in with the help of tally marks. In the given list, first of all you have to see this is the color box, means यहाँ पर इन बॉक्सेस में सारे कलर्स रिप्रेजेंट कलर्स नेम वाइज प्रेजेंट किए गए. दिस इज ब्लू कलर. इनिशियली वी आर हैविंग ब्लू इन द फर्स्ट बॉक्स. ओके, देन इन द सेकेंड बॉक्स वी आर हैविंग कलर ऑरेंज. This is color green, red, yellow, and this is the total. So blue color liking boys or girls, you can say the students who like blue color, these are 4. The students who like orange color are 7 in number. The students who like green, these are 3 in number. Red liking 10, yellow liking 9, and the number and the total of these all students are 33. That is the sum of क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो. सो बेसिकली इट मीन्स कि एक क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कुछ बच्चों की चॉइस ब्लू कलर है, कुछ की ऑरेंज, सम ऑफ लाइक ग्रीन, सम ऑफ चिल्ड्रन लाइक रेड कलर, सम ऑफ देम लाइक येलो कलर, एंड द टोटल नंबर इज 33. So these data you have to represent with the help of tally marks. In the previous video, in the previous lecture, we represented the data with the help of pictures. That was the pictorial form. ओके, आप सपोज 4 के लिए आप कोई भी शेप उठा सकते हो, स्माइली. सो यू ड्रॉ 4 स्माइली, 7 स्माइली, 3 स्माइली, 10 स्माइली एंड 9 स्माइली. बट हियर वी हैव टू यूज टैली मार्क्स, नो पिक्चर. टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करते हैं आई विल एक्सप्लेन टू यू. अब 1 के लिए 1 टैली मार्क, 2 के लिए 2 टैली मार्क, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और जैसे आपका 5th होगा आप स्लांट कर दोगे टॉप से बॉटम पे टच करते हुए. इज दिस क्लियर? ओके, now let us draw the table. Color, we will make 3 columns. First one color, then votes, and then tally marks. Color means this color, these colors we are going to write here. Votes means जो चिल्ड्रन के वोट्स है, जितने भी बच्चे पर्टिकुलर कलर लाइकिंग है, ब्लू, येलो, ऑरेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उनके लिए हम टैली मार्क्स यहाँ ड्रॉ करेंगे. So this is the table. This is as similar as provided. बस ये आपके horizontal form है, this is in the vertical form. Your data is the same. There is same data. For that you have to draw the boxes in which we are going to draw the tally marks. Okay. There is blue color liking children 4, orange color 7, green 3, red 10, and yellow 9. Now let us see how to draw tally marks. As I explained to you children, that for 1 vote
1 tally mark will be there. अगर आपको आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 टैली मार्क यूज करोगे. इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट 2, आप 2 टैली मार्क्स यूज करोगे. इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट 4, you will use 4 tally marks. If you have to represent 5, there is little bit change. अगर आपको 5 डिनोट करने हैं, आप कैसे करोगे उसको? 4 स्टैंडिंग एंड देन 5th वाला जो भी होगा वो स्लांट में, मीन्स टेढ़ा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी शो किया है, लाइक दिस, ऐसे स्लांट. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट अस ड्रॉ द टैली मार्क्स फॉर 4. हम सबसे पहले 4 के लिए ड्रॉ करेंगे टैली मार्क्स. 1, 2, 3 and 4. 4 टैली मार्क्स डन. सो दिस वन इज डन. हमारा ये पार्ट डन हो गया. नाउ लेट अस ड्रॉ फॉर 7. लुक एट इट केयरफुली. 1, 2, 3, 4. नाउ देयर इज लिटिल बिट चेंज, मीन्स आपको 5th वाला ड्रॉ करना है. तो 5th कैसे होगा बेटा? ये यहाँ से और इसके बॉटम पे टच करेगा. ओके, दिस इज 5th वन. इज इट क्लियर? 6th फिर से स्लांट काउंट करना स्टार्ट करोगे. 6 and 7. इट इज क्लियरली मीन दैट every 5th number, every 5th word, every 5th one is in the form of slant. वो slant line बन जाएगा. It can be 5, it could be 10, it could be 15 और 20, 25. मीन्स जो भी नंबर 5 की टेबल में आ रहा हो, एवरी नंबर 5th होता जाएगा. देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, हैव यू गॉट इट? ग्रीन 3. 1, 2, 3. Next one is red. You have to make tally marks for 10. So let us draw 1, 2, 3, 4. Now here is 5th one. So again we will do slant. Okay, 5th. Now 6th, 7, 8, 9, then 10. Got it, children? It's easy, just need little bit practice. Next is yellow. Then 9. 1, 2, 3, 4. 5th हम कैसे करेंगे? Slant. 5, 6, 7, 8, 9. So here we have drawn tally marks for 4, 7, 3, 10 and then 9. Okay children, now let us take next question. Let us see. Here we are going to do exercise 4b. Prepare a telegraph for each of the following. Number 1, favorite flavors of ice creams of class 3 students are given below. This is the table that is already provided in your book, so no need to make it again, because there is, as you can see, there is space given. So in this given space you have to draw the tally marks. No need to make this again. आपको given space में ही tally marks draw करने होंगे. So table is already provided to you. Just need to press tally marks. Okay, let's start. Strawberry. The number of students like strawberry flavor, that is 6. So let us draw 6 tally marks. 1, 2, 3, 4. 5th will be slant. 5th, then 6th. It's done. So 6 के लिए आपने tally marks यहाँ draw किए. ये बन गया हमारे 6. Next is 4. How to draw 4? This is so simple. 1, then 2, 3, 4. For each word there is 1 tally mark. Okay. एक word के लिए एक tally mark होता है. 5th जब भी होगा तो आप उसको slant करोगे.
then 6th standing, 7th standing, 8th standing, 9th standing, 10th would be slant. So here we have drawn 4 tally marks. Next is pineapple. Pineapple liking children are 8. Means there are total 8 children who like pineapple flavor of ice cream. For that one we need to draw tally marks. Let us start doing 1, 2, 3, 4, 5. Fifth would be slant. 6th, 7th, 8th. Done. जो नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है टिल देन यू हैव टू ड्रॉ द टैली मार्क्स, उतने ही आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं. यहाँ पर 6 है, यू हैव ड्रॉन 6. हियर 4, यू हैव ड्रॉन 4. हियर 8, you have drawn 8. Here 12, then you will draw 12. So chocolate flavor liking children are 12. Let us draw the 12 tally marks. 1, 2, 3, 4, 5. 5 done. Now 5 से आगे हम काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10. Children, the basic rule is here only 4 standing lines we can draw. हम सिर्फ 4 ही standing lines बना सकते हैं, 4 से ज़्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो. जैसे ही फिफ्थ वाली होगी आपको वो स्लांट करनी होगी. और सिमिलरली फिर 5 की टेबल वाली लाइंस भी आप स्लांट करोगे, सच एज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. जो भी नंबर 5 की टेबल में होगा आप वो वाले नंबर की लाइन को टैली मार्क को आप स्लांट कर दोगे, रादर देन all would be in standing position. Here we have done 10, 11, then 12. Is this clear? Next is 5. Pista flavor liking children are 5. 1, 2, 3, 4. So here fifth one is, so that would be in slant. There is fifth one. Is it clear? Next one is total. Okay children, so for 6 we have drawn tally marks, 4 we have drawn tally marks, 8 like this we will draw, for 12 we will draw like this, and for 5 we will draw like this. Okay, so I hope you have got it. Let me explain to you again. जैसे ही आपके पास जो फिफ्थ वाला, आई नो यू वुड कन्फ्यूज्ड इन द फिफ्थ वन, आप फिफ्थ में ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप फिफ्थ को कैसे करेंगे, फिर सिक्स वाला स्टैंडिंग होगा कि नहीं. ऑब्वियसली स्टैंडिंग होगा. 5, जैसे आपके पास 5 आएगा, फिफ्थ नंबर होगा, आप उसको स्लांट करोगे, उसके बाद 4 स्टैंडिंग लाइन टिल द काउंटिंग कम्स ऑफ द गिवन नंबर. ओके, जितने भी नंबर्स की काउंटिंग होती है आप उतने ही लाइंस को ड्रॉ करोगे स्लांट. फिर जैसे 5 की लाइन का मीन्स नेक्स्ट 10, दैट वुड बी स्लांट. 10 to next 15, that would be slant. 20, that would be slant. 25, slant. 30, slant. 35, slant. Have you got my point, what I'm trying to say? Okay, so now let us see, there is total given. Yeah, here total given. No need to draw tally marks for total. आपको टोटल के टैली मार्क्स यहाँ ड्रॉ नहीं करने हैं. ओके, ओनली इनकी आपको ड्रॉ करनी है. ये सिर्फ टोटल होता है हमारे पास. दिस इज द टोटल ओनली. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, दैट इज इन क्लास 3. ओके, सो नो नीड टू ड्रॉ tally marks for this one. This is only total that is already given in the table. Is it clear children? So these are the flavors. Mine one is chocolate favorite flavor. You tell me which is your favorite flavor. Tell me in the online classes. Okay, I'll listen there. So I hope you have got it. Still, if you have any confusion, you can ask to me in the online classes. Now let us take homework.
Okay children, before taking homework, let me explain to you. Let us see question number 2 also. Let me explain to you. Question number 2. Monal decided to count the number of items in her refrigerator. She listed the following items. These are the items containing in her fridge. Items in refrigerator. These are carton of milks 2, carton of juice 2, eggs 12, apples 4, pears 8. We have to draw the tally marks for each of these. There are carton of milk is equal to 2. So we have to draw 2 tally marks. 1, 2. Move to the next one. Carton of juice. There are 2 cartons. 1, 2. 2 tally marks. Next is 12. Eggs are 12. Draw 12 tally marks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next is 4. 1, 2, 3, 4. Next 8. Pairs are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 done. So here we have done also. I hope this is understood. Now let us take homework. And your homework is do exercise 4B, question number 3 in book. You have to do question number 3 completely in book only. Now let us discuss the homework solution of previous lecture. In the previous one, your homework was exercise 4A, question number 3. The pictograph shows the number of cold drink bottles sold by a shopkeeper on a particular day. Read the pictograph and answer the questions. This is the pictograph of bottles sold by shopkeeper on a particular day. Coca-Cola, these, Pepsi, Mirinda, Limca. I know children, these bottles are not clearly visible to you, as this was in very light color in your book also, so this is not clearly visible. You can assume with this red mark. आप इस रेड मार्क की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर 1 बोतल है, यहाँ 1 बोतल है, इधर 1 बोतल है और यहाँ पर भी. Now let's come to the information. Here 1, this bottle sign stands for 10 bottles. यहाँ पर जो एक बोतल का साइन है ये 10 बोटल्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे प्रीवियस वीडियो में 1 कार वॉज रिप्रेजेंटिंग 1100 कार्स. एक कार का सिंबल 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता था. सिमिलरली 1 बोतल इज स्टैंडिंग फॉर 10 bottles. Here are some questions. Number 1. How many bottles of Pepsi were sold? Pepsi की कितनी bottles sold की गई हैं? Number 2. How many bottles of Limca were sold? Number 3. Which drink has maximum sale? Number 4. Which drink has minimum sale? Number 5. How many bottles were sold in all? Come to the first one. How many bottles of Pepsi were sold? Pepsi is here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 multiplied by 10 is equal to 70. How many bottles of Limca were sold? लिम्का की कितनी बोतल सोल्ड हुई है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 multiplied by 10 is equal to 60. Which drink has maximum sale? कौन सी ड्रिंक है जिसकी मैक्सिमम सेल हुई है? So here it is clearly visible. This is Pepsi. Only name you have to mention, no need to write the number. Which drink has minimum sale? किसकी सबसे कम सेल हुई है? This is Mirinda. How many bottles were sold in all? Total कितनी bottles sold हुई हैं? Let us count 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 multiplied by 10 is equal to 200. Total कितनी bottle सेल हुई है? 200 bottles. Okay children, so I hope you have understood the chapter completely, because as we have done the chapter, only 2 topics were there which we have covered in 2 videos. I hope you have got it. Still, if you have any confusion regarding this chapter, you can ask me in the online classes. You are welcome to ask. Let us meet in the next video. Till then, bye bye. Take care yourself.